कीर्केगार्ड की किताब फिलोसॉफिकल फ्रैगमेंट्स के चौथे चैप्टर का नाम है द केस ऑफ द कंटेम्पररी डिसाइपल, और कीर्केगार्ड इसमें कंटिन्यू करता है टू ड्रॉ डिस्टिंक्शंस बिटवीन सॉक्रेटिस एज टीचर एंड द गॉड एज टीचर, जो उसकी नज़र में जीसस क्राइस्ट थे। पिछले चैप्टर से हमने देखा है कि कीर्केगार्ड हमें बताता है कि एक कंडीशन जो है विद द गॉड बीइंग द टीचर, वो कंडीशन ये है कि द गॉड हैज़ टू गिव द लर्नर द कंडीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग टॉट। लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द सोक्रेटिक पैराडाइम, जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, ना ही वो रिबॉर्न हो रहा है, ना ही जो टीचर है वो स्टूडेंट को वो कैपेसिटी दे रहा है जिससे वो स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सके, कॉम्प्रिहेंड कर सके कि टीचर उसको सिखाना क्या चाह रहा है। ये कंडीशन सिर्फ कीर्केगार्ड की नज़र में हम देखते हैं इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जहाँ पे जो गॉड है वो आता है एज अ टीचर। और इस सेंस में कीर्केगार्ड इज ट्राइंग टू प्रूव कि जो वर्ल्डली इनकारनेशन थी ऑफ जीसस क्राइस्ट एज गॉड, ही केम as God himself and he came as a teacher to teach other people, and the subject that he was trying to teach was himself. Kierkegaard ये बयान करते हैं लफ्ज़ों में, The God has thus made his appearance as teacher, for we now resume our story, and has assumed the form of a servant. To send another in his place, one high in his confidence, could not satisfy him, just as it could not satisfy the noble king to send in his stead even the most trusted man in his kingdom. But the God has also another reason. For between man and man, the Socratic relationship is the highest and truest. If the God had not come himself, all the relations would have remained on the Socratic level. We would not have had the movement, and we would have lost this paradox. The God's servant form, however, is not a mere disguise, but is actual. It is not a parastatic body, but an actual body. Parasitic body, sorry. And from the hour that in the omnipotent purpose of his omnipotent love, the God become a servant, he has, so to speak, imprisoned himself in his resolve, and is now bound to go on to speak foolishly, whether it pleases him or no. He cannot then betray himself. There exists for him no such possibility as that which is open to the noble king, suddenly to show that he is after all the king, which is no perfection in the king that he has this possibility, but merely discloses his impotence and the impotence of his resolve that he cannot really become what he desires to be. यहाँ पे कीर्केगार्ड कहता है कि what the God teaches is himself. He is the content of the teaching. ये जो खुदा की प्रेजेंस है, इट इज़ नॉट इंसिडेंटल टू हिज टीचिंग, बट इट इज़ एसेंशियल टू हिज टीचिंग। जो उसकी प्रेजेंस है इन ह्यूमन फॉर्म, इन द लोली फॉर्म ऑफ अ सर्वेंट, इट इज़ प्रिसाइसली द टीचिंग। इसी वजह से कोई और इंसान अगर खुदा भेजता है एज अ टीचर, लाइक जॉन द बैप्टिस्ट, तो उस इंसान को पता ही नहीं होता कि पढ़ाना क्या है, स्टूडेंट को सिखाना क्या है, स्टूडेंट को कंडीशन कौन सी देनी है, बिकॉज दैट पर्सन वॉज नॉट गॉड, एंड सो ही कुड नॉट teach what was required to be taught. Only God could teach himself, because God himself was the content of the teaching. Kierkegaard इसके बाद कहता है कि in fact there is no teaching, there is no doctrine in the traditional sense, और इसकी वजह से there is no learner in the traditional sense either. जो God है Kierkegaard की नज़र में, Jesus Christ is called rabbi, he is called teacher, but those who hear him are not the learners. In fact, anyone who learns from him in the traditional sense has only a Socratic relation to him. Kierkegaard कहता है, wherever the teacher appears, the populace flocks about him, curious to see, curious to hear, craving to be able to tell others that they have seen and heard him. Is this curious crowd the learner? By no means. Or if one of that city's professional teachers were to come secretly to the God in order to test his powers in the polemics of debates, is this the learner? By no means. If the populace or if that professional teacher learns something, then in the purely Socratic sense, the God is only the occasion. वो आगे कहता है, if someone else concerned himself only with the teaching which that teacher occasionally presented, if he cherished every instructive word that came from his mouth more than his daily bread, if he had 100 others to catch every syllable so that nothing would be lost, if he painstakingly conferred with them in order to obtain the most reliable version of what the teacher taught, would he therefore be a follower? By no means. इसकी वजह क्या है? इसकी कीर्केगार्ड सेवरल रीजंस बयान करता है। पहली रीज़न जो वो बताता है वो है कि जो भी इस गॉड टीचर को, इस केस में जीसस क्राइस्ट को सुनता है, उसके अंदर
अपने आप से ही वो कंडीशन मौजूद बाज़-औक़ात नहीं होती टू बी एबल टू अंडरस्टैंड हिम और टू बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि ये जो गॉड टीचर है ये सिखाना हमें क्या चाह रहा है। जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि कीरकेगार्ड कहता है कि जो प्राइमरी डिफरेंस है बिटवीन द गॉड टीचर एंड सॉक्रेटिस एज टीचर, इसके जो गॉड टीचर है वो लर्नर को वो कैपेबिलिटी देता है, वो कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड टू कॉम्प्रिहेंड देता है जो सॉक्रेटिस एज टीचर नहीं दे सकता। और दूसरी जो रीज़न वो बताता है वो कहता है कि इन रिलेशन टू द गॉड देयर इज़ नथिंग दैट आई हैव टू नो बट रादर समथिंग आई हैव टू बी रिबॉर्न, दैट इज़ आई हैव टू रिसीव द कंडीशन फ्रॉम द गॉड टीचर। फिर कीरकेगार्ड एंड में, इस चैप्टर के एंड में, जो कंटेम्प्रेरी फॉलोअर है और जो नॉन कंटेम्प्रेरी फॉलोअर है उनमें डिफरेंस ये बताता है कि जो हिस्टोरिकल कंटेम्प्रेरी है ही डिड नॉट हैव टू पुट अप विद द इंटरवीनिंग ईयर्स ऑफ फॉल्स इंटरप्रिटेशंस। उनकी सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों को ही बोथ ऑफ देम हैड टू रिसीव द कंडीशन फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। और कंटेम्प्रेरी फॉलोअर के पास कोई एडवांटेज इस तरह का नहीं था जो कीरकेगार्ड कहता है कि कुछ नॉन कंटेम्प्रेरी फॉलोअर्स को लगता है कि द कंटेम्प्रेरी फॉलोअर्स हैड सम सॉर्ट ऑफ एन एडवांटेज बिकॉज दे कुड सी जीसस क्राइस्ट इन द फ्लैश एंड they were in some sort of a privileged position. लेकिन वो कहता है कि कोई एडवांटेज as such नहीं था because when they used to see Jesus in the flesh they had to know that this is the servant form of God, but God is more than this. God is more than just the God teacher that has presented himself to the world in order to teach us. तो उस सेंस में जो कंटेम्प्रेरी फॉलोअर्स हैं और जो नॉन कंटेम्प्रेरी फॉलोअर्स हैं वो एक ही जगह पे हैं। दे बोथ हैव टू रिसीव the condition to be able to understand directly from God.